Open your copy, write down today's date and give heading revision. Chapter number 7, fractions. What is a fraction? What is a fraction? Raise your hand if you know the answer. What is a fraction? Don't raise your hand. If you want to tell the answer, then only raise the hand. Yes, Molly. What is a fraction? मैम जो हाफ हो सकते हैं उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। जो हाफ हो सकते हैं उसे फ्रैक्शन बोलते हैं। मैम इक्वल साइड में हाफ हो सकते हैं। ओके, और कोई आंसर्स? एनी अदर आंसर? Yes, Samiksha. Yes, ma'am, telling. When a whole is divided into equal part, a part or part of the whole is called the fraction. This is what given in book. वो तो आपने पढ़ के बता दिया, but what it means? Can you मैम जो explain? इक्वल डिवाइड होता है। जो एकदम डिवाइड होता है। Any example you can give? Yes, ma'am. हाँ, बताओ कोई example. Ma'am, there are one box and I divide equal. You divided equally in that box. In how many parts? Ma'am, into 4 parts. Into 4 parts. Okay, correct. Yes, good. Good, Samiksha. Yes, Shaurya? Ma'am, can I say the example? हाँ. Ma'am, like triangle. Like triangle, what? Ma'am, 2 parts. Triangle, 2 parts. Okay. So, like Samiksha said, when a whole is divided into equal parts, for example, this is a circular pizza. I think everyone has eaten the pizza. सबने पिज्जा खाया ही होगा या देखा होगा, एटलीस्ट किसी ने खाया नहीं है तो सबने देखा तो जरूर होगा। When you order, हाँ खाया भी है। So when you order a pizza, you order one whole pizza, correct? You order one whole pizza, but pizza came into pieces, correct? वो pieces में आता है, ऐसे pieces कट रहते हैं। So when a whole is divided into equal part, one part, suppose Vaibhav has eaten 2 parts. So how much part Vaibhav has eaten? No need to write. I will show worksheet. When I will share the worksheet, ये बस मैं अभी explain कर रही हूँ. When I will share the worksheet, that worksheet you have to write. Okay? No need to write this. So, this shaded portion, this much portion Vaibhav has eaten. So how many parts are there? Total how many parts? How many parts are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8 parts are there. So we will write 8 in denominator. And out of 8, how many parts Vaibhav has eaten? 2 parts. So we will write 2 in numerator. We write fractions in as numerator and denominator. Numerator and denominator. Okay. So this is called a fraction. When a whole part is divided into, this is divided into equal parts. So the part, जिस part के बारे में हम बात कर रहे हैं, that part is called
That whole part is called fraction. Okay, correct? So this is called fraction. When a whole part is divided into equal parts. एक whole part है. For example, we can take one more example. I have a box, a rectangular box. Okay. So I want to keep pencils, eraser, and sharpener. Okay. And I want to keep these things separately. So I have divided this rectangular box into 3 parts so that I can keep my pencil, eraser, and sharpener separately. Now, I have divided one whole rectangular box into 3 equal parts. Correct? So, when I am talking about in which part, in how many part I have kept pencil. So, for pencil, we will write out of this 3 part, I will keep pencil in one box. So for pencil, we will write, there are total how many parts? 3 parts. So we will write 3 in denominator, and we have kept pencil in one part. So we will write 1 in numerator. So pencil is 1 by 3. So this 1 by 3 is fraction. Okay. This is we write in symbol. These are the fractions that we write in symbol. Now we have to write in words. How we will write in word? How we will write this 2 by 8 in word? Okay. So 2, 8. 2. How we will write 1 by 3? 1/3. Okay. 1/3. This is how we write fraction in number, in written. Okay. This is how we write. This is called fractional number. And this is called fraction. Correct? Now, I'm going to share the worksheet. No one will touch the screen. This is your worksheet. First of all, write down revision chapter number 7, fraction. Yes, Bhavya? मैम यहाँ पे जो शेडेड का है तो मैम हमें वो ड्रॉ भी करना है. Yes, you have to draw. ओके मैम. Yes, Samiksha? मैम हमें जैसे वो कलर किया है वैसे कलर भी करना है. You can do color with your pencil. No need to do same color. You can shade with the help of pencil. ओके मैम. Yes, Samiksha? मैम ये हम कैसे लिखेंगे? ऐसे जैसे अभी ये 3rd वाला है तो वो जैसे बॉक्स बना है उसमें कैसे लिखेंगे? 5 टोटल नंबर ऑफ, अभी मैंने कैसे बताया, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यू हैव टू राइट इन डिनोमिनेटर. एंड शेडेड पार्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट. सो कितने पार्ट शेडेड हैं इन क्वेश्चन नंबर 3? हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, समीक्षा? क्वेश्चन नंबर 3 4 मैम 4. एंड हाउ मेनी टोटल पार्ट्स आर देयर? मैम 5. हाँ, सो हाउ यू विल राइट फ्रैक्शन? मैम 5 4. 5 4? What 5 4? 4 by 5 ना? यस मैम 4 ऊपर 5 नीचे. हाँ. Like how you get marks? You get marks out of, suppose like yesterday I have conducted test of 10 marks. So you got 9 out of 10 na? So total marks is always total we write in denominator. Total हमेशा denominator में लिखते हैं, and out of this total how much you get we write in numerator. So we will write 9 here. In the same way you have to write
Here also, shaded portion you will write in numerator. Thank you, ma'am. Okay. Yes, Molly? मैम इसमें करना क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा. What is the fraction of the shaded area? Shaded portion कितना है total में? Okay. Question number 4 of your book. Exercise 1, question number 4 of your book. It's same. Yes, Molly, any doubt? No, ma'am. Then lower down your hand. If you don't have any doubt, then lower down your hand. Yes, Priyansh? मैम नेम और क्या क्या लिखना है? You no need to write name. You are writing in your revision copy, na? So why you will write name? Just give heading revision and name of the chapter and today's date. मैंने बोर्ड पे लिखा भी है. You joined the class late? No, ma'am. Then मैम मैं 5 minutes लेट आया हूँ. so you should be on time. Class time पे join करना चाहिए ना बेटा. So heading देना Yes, है ma'am. revision. Write down today's date. Give heading revision and chapter number 7 fraction. Okay? Yes, ma'am. Yes, Samiksha? मैम मैं रिवीजन कॉपी में नहीं कर रही हूँ मैम. जो कॉपी कंप्लीट हो चुकी है हाँ. उसमें उसके साथ कर रही हूँ. हाँ, in classwork copy only, na? If you have Yes, paper, ma'am. no problem, no problem. Correct. Yes, Vinamra. Ma'am, Ma'am, we have to write with pen. Yes, you are in which class, Vinamra? Ma'am, 4th. So in class 4, you write with pen or pencil? Ma'am, pen. Then Okay, ma'am. you can shade. No need to use the color. If you don't have color at present, you can shade the portion with the help of pencil. ठीक है? Shaded portion जो है वो आप pencil से भी shade कर सकते हो. Yes, निश्चय. मैम वो मैम मेरे को लगा मैम 6 नीचे है मैम, तो मैम उसके लिए मैम गलती से हाथ उड़ी है. Okay. First of all, write down the question. Then I will ask answer one by one. ठीक है? पहले सब लोग questions जल्दी लिख लो. Yes, Apurva. Yes, Apurva. Yes, ma'am. मैम फ्रैक्शन मतलब जैसे अगर मैम आपको पूछो मैम मतलब अगर अपन फ्रैक्शन है मतलब जो ये 6 वाला है उसमें पहले 1 पार्ट शेडेड है, तो पहले वो शेडेड पार्ट का नंबर देंगे या फिर जो शेडेड नहीं है उसका नंबर. फ्रैक्शंस कैसे लिखते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. सो न्यूमरेटर में क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा आपको? न्यूमरेटर यार अभी मैंने बताया ना कि टोटल नॉन शेडेड टोटल पोर्शन, टोटल नंबर कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में कि न्यूमरेटर में? सपोज like yesterday I have taken test. Okay, so total number of marks are बेटा न्यूमरेटर जो है वो ऊपर लिखते हैं ना एंड डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं. सो टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है डिनोमिनेटर में. तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? काउंट करके बताओ अपूर्व.
क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? टोटल हमारा मैम 9। बेटा अच्छे से काउंट करो। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6, मैम 8। मैम 8। हाँ, मैम 8। 8 we will write in denominator और in numerator? 8 मैम। हाँ, 8 हम न्यूमरेटर में लिखेंगे कि डिनोमिनेटर में लिखेंगे? 8 we will मैम क्या डिनोमिनेटर। Yes, correct. Denominator में लिखेंगे because total number of parts always we write in denominator. Now out of this, how many part is shaded? कितने पार्ट शेडेड है अपूर्व? मैम 1। So 1 we will write. मैम तो 1 को न्यूमरेटर Yes, हाँ, न्यूमरेटर में लिखेंगे। Yes, correct. Because what is the question? What is the number? What is the fraction of the shaded area? Shaded area का fraction पूछा है, इसलिए हम 1 लिख रहे हैं। अगर नॉन शेडेड पूछता कि शेडेड कितने नहीं है, तो we will write the remaining, जो शेडेड नहीं है उनका फ्रैक्शन हम लिखेंगे। अभी हमें क्वेश्चन में शेडेड पूछा है। ओके, यस दक्षिता, I have completed. Oh, thank you, yellow you have completed. You have written answers also. Yes, ma'am. Oh, very good. Then drop the answer in chat box Okay, ma'am. one by one. Those who have finished, they can drop the answer in chat box. Yes, Priyansh. मैम मैम व्हाट्सएप में भेज सकते हैं? क्या बेटा? मैम मैं व्हाट्सएप में फोटो खींच के भेज दूं? फोटो नहीं बेटा, पीडीएफ बना के भेजना है आपको। क्लास पहले अभी फिनिश नहीं हुआ है, क्लास फिनिश हो जाने दो, उसके बाद अभी और क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आफ्टर फिनिशिंग द क्लास, क्लास ओवर हो जाने के बाद आप पीडीएफ बना के भेजना, अभी नहीं। यस मैम। ओके, सबका हो गया? यस गाथा। मैम I will tell answer. Drop the answer in chat box. When I will ask, then at that time tell the answer. If you have finished, then drop the answer in chat box. So number 1. Who will tell the answer? What is the fraction? I just want the answer. Ma'am, can I tell? हाँ मौली बताओ। Ma'am, 4 shaded. Tell me fraction. Fraction कैसे लिखेंगे? Don't tell me 4 shaded and 6 not shaded. Fraction क्या है? Like 1/3, 1/2 ऐसा है क्या है? 6/4, 4/6. What is the Ma'am, fraction? 6. हाँ मौली बताओ। Ma'am, 6/4. 6/4 और 4/6? 4/6. Sure? Yes, ma'am. Okay. So 4/6 is correct.
One by one. One by Yes, one. ma'am. Ma'am. Wait a minute. Ma'am. Wait a minute. मैं जिसका नाम लूंगी बस वही बोलो. Hello. Ma'am. 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 वही करना है. Ma'am. Please. Vinamra, why are you saying ma'am, ma'am? When I Ma'am. will ask the question at that time only speak. Ma'am, I am in last 10th. I am in last 10th. You are in last 10th question. Ma'am, I am in 4th. Why so slow? Ma'am, I am in 5. Screenshot. Ma'am, I am in 4th. Ma'am, I am in 5. See you later. Okay, wait a minute. Excuse me, ma'am. Okay, I am again sharing the screen. Wait a minute. Do it fast, beta. We have to do lot. So number 1 answer is 4 by 6. Number 2 answer is, yes Gatha batao, answer is Ma'am, किसका? second. Second, answer of second. Yes, Bhavya. Ma'am, second answer is हाँ. 1 by 2. 1 by 2. how 1 by 2? Total number of parts कितने हैं? Sorry, ma'am, 1 by 3. हाँ. 1 by 3. Correct. Tell me next one also Bhavya. Okay, wait a minute. I'm telling the answer, you can check your answers. If your answers are correct, then give a right. Okay? Answer of second, Bhavya has told. Answer of third is 4 by 5. Answer of fourth is 3 by 6. Fifth answer, 2 by 8. Correct answer is 2 by 8. Sixth, I have told already 1 by 8. Seventh, how many total parts are there? 6 parts. Out of 6, 5 are shaded. So 5 by 6. Number 8, how many parts are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parts are there, total 8 parts. So 8 will come in denominator. And how many parts are shaded? 4 parts are shaded. So answer is 4 by 8. Number 9, how many total parts are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8 parts are there. Out of 8, 7 part is shaded. So answer is 7 by 8. Okay. Question number 10. How many parts? 5 parts are there. So 5 will come in denominator. And out of 5, 3 is shaded. So answer is, shaded portion is 3 by 5. अगर क्वेश्चन पूछता है कि नॉन शेडेड पोर्शन कितना है, so you will write, because in question number 10, how many part is not shaded? 2 part is not shaded, so we will write 2
by 5 because total number of part is 5 and non-shaded part is 2. So that's why we have written 2 by 5 here. Okay. अगर क्वेश्चन पूछेगा कि नॉन शेडेड पोर्शन, बट हियर व्हाट इज द क्वेश्चन? शेडेड पोर्शन. यू हैव टू राइट शेडेड पार्ट. Okay. Now moving to next question. Shade the figure. In this question, fraction is given. You have to shade the portion. You have to shade the diagram. You can check your answer from here. Vaibhav, are you writing in your copy? मुझे आप लिखते हुए नहीं दिख रहे हो. Are you writing in your copy, Vaibhav? Yes, Vaibhav. मैम लिख रहा हूँ. बट आप तो बैठे हुए हो तब से. लिखो जल्दी. नो मैम. कौन से क्वेश्चन में पहुंचे? मैम दूसरे वाले मैम 6th. ओके. In next question, I am telling what you have to do. Like for example, diagram is given and fraction is given. So 1 by 4. 1 by 4 is the fraction. So 4 is denominator, total number of parts. Out of this, one part is shaded. So in this diagram, you have to shade only one part. Numerator में जितना भी number दिया है, that part you have to shade. Okay, correct? Understood? Now only 10 minutes left. Write down the question fast. Here is the question. First, question number 11 that I have explained just now. जो अभी मैंने explain किया, that is question number 11. Yes, Samiksha? मैम जो आप वो बोर्ड में लिखे हो वो फ्रैक्शन का जो कलर हुआ है वो आंसर है. Yes, this is the answer. The shaded portion जो मैंने lines draw की है वो आंसर है. आपके नहीं मैम, वो जो इधर फर्स्ट वाला लिखा है ना आपके यहाँ 4 by 6. Yes. ये वो जो जिसमें कलर हुआ था वो वाला है जो पहले आप स्क्रीन हाँ. दिखाए थे. हाँ, yes. ओके मैम. हाँ. मैम ये जो 11th वाला है वो काय का है? काय का है means? काय का मैम है? मैम 10 के बाद जो वो 10 हुआ ना ये चैप्टर रिवीजन उसका खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया ना. हाँ, shade the figure with the indicated fraction. यस मैम, तो उसका वापस से मैं 1 से लिखूं कि 11 ही लिखूं? 11 ही लिखोगे. ओके मैम. And what is this language काय का है? क्या होता है बेटा ये? Five minutes left. Write down the question fast, okay?
Yes, Vaibhav, what happened? You raise your hand, any doubt? No, ma'am. Write down the question fast, Vaibhav. Yes, Samiksha. मैम मेरे को 20 वाला दिखाओ ना पूरा और 15 वाला. After completing, you have to make PDF of your copy and send it to me in email ID, in my email ID. Okay? The number of parts given in numerator, that portion you have to shade. ठीक है? न्यूमरेटर में जितना नंबर दिया है वो पोर्शन आपको शेड करना है. लाइक इन क्वेश्चन नंबर 16, 2/6. So 6 part, total number of parts is 6. Out of this 6 part, you have to shade 2 part. You can shade any 2 part. कोई भी 2 part को आप शेड कर सकते हो. But 2 parts you have to shade. Yes, फिर नंबर. मैम जिन दिन का होते जा रहे वो लीव कर सकते हैं. नहीं. ओके मैम. आपका हो गया? विनम्र, have you finished? नो मैम. Then मैम आई एम आस्किंग. yes, निश्चय. मैम मेरा 20 तक हो गया. मैं लीव कर सकता हूँ? नहीं. कौन बोला? ये क्या नया लेके आए हो क्लास में? कभी ऐसा होता है कि क्लास लीव सिर्फ ड्यूरिंग एग्जाम यू कैन लीव इन एट द टाइम ऑफ टेस्ट? यस मैम. दिखाओ निश्चय. हैव यू रिटन? शो मी. यस मैम. शो मी. Bring it little closer. Okay. ठीक है. But you could have done, मतलब और अच्छे से नीटली कर सकते हो निश्चय. गाथा. मैम I have done. So for this you have raised your hand. If you have done, if you have done, then it's very good. Show me your copy where you have done. Show me your copy where you have done, Gatha. Now I will ask one by one to everyone to show your copy. Kashvi? यस मैम. Done? लिख लिया? मैम मेरे को ना ये 6th वाला मैम समझ नहीं आ रहा है. 6th question or 16? 16 सॉरी मैम. मैम बाकी सारे हो गए. मैं 16 के लिए तो ये जगह छोड़ दी थी. बाकी सारे जैसे हैं वैसे ही क्वेश्चन नंबर 16 भी है. मैम लेकिन बनाऊंगी कैसे मैम? नहीं हो रहा है. नंबर 16 वो तो सर्कल है. मैं मतलब कैसे करूंगी इसको? मतलब सर्कलिंग. Circle you can draw with the help of anything. You can use your pen, cap. आपके घर Yes, कोई भी सर्कल, कोई भी सर्कल, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसको ये लेके आप ड्रॉ कर सकते हो. यस मैम. Bhavya, have you done? Ma'am, I have done just now. All 20 questions? बस मुझे आंसर्स लिखना है, शेड करना है बस.
Okay, do it. Okay, ma'am. Shaurya, have you done? No, ma'am. In which question you are? I'm in 15. In 15th. 16. Yes, ma'am. Okay, do it fast. Dhanvi? Dhanvi, have you done? बोलो दानवी. आपकी आवाज नहीं आ रही. Okay, do it. Only less than 1 minute is left. Do it fast.